आगे सब वेरी गुड. So let me straight away, क्योंकि मेरे पास बैटरी बहुत कम है. Okay. इसलिए मैं सीधा जाता हूँ इसमें. Okay. So what I was trying to say is this. तो मैंने अभी तक ये किया कि norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y just by the properties of the norm, and minus norm of x minus norm of y is also less than equal to norm of x minus y, which means that modulus of norm of x minus norm of y is less than equal to norm of x minus y. So once I have done this, it implies that norm is continuous, because suppose xn converges to x, it implies जो हमारी definition है convergence की कि norm of xn minus x converges to 0. और अगर मैं इस पे function लगा दूं, but I can say that norm of xn minus norm of x जो है is less than equal to norm of xn minus x, which converges to 0, which implies that norm of xn converges to norm of x. यानी अगर x and x converge करेगा तो x norm of x and x norm of x को converge करेगा, which implies that norm xn, norm is a continuous function. Norm as a function from x to non-negative real numbers is continuous. Or furthermore, under this topology, which is मतलब अब है ना जो हमारी topology है, it comes from the definition of the norm. It is the metric topology on x. So under this topology, norm is a continuous function. Furthermore, if I take this operation, the vector space operations, yani if I take xy going to x plus y, so I'm actually, this is a mapping. I'm taking a pair x cross x. Of course, x plus y also belongs to x. Similarly, the scalar multiplication, which sends alpha x to alpha into x, which belongs, but here it would be k cross x से जो मेरी domain है, k cross x से हम जा रहे हैं x में. मतलब we can think of them as mappings, vector addition and scalar multiplication. So both of these operations are continuous. ये तुम्हारे notes में दिया हुआ है. So which means that if xn converges to x, then y plus xn would converge to y plus x for all y. इसका मतलब है vector addition जो है, addition as a function is continuous, and of course alpha into xn would converge to alpha x. वैसे नोट्स में शायद मैंने कहीं पे लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो you can do it yourself. ज्यादा मुश्किल या इतनी ही simple exercise है जितनी है जो हमने अभी की ना कि norm is continuous. So what should be the next topic? अब थोड़ा सा आगे तो बढ़ ही गए. हाँ, नोट्स में दिया हुआ है. What should be the next thing? तो अब हमने, मुझे लगता है we have got a क्या बोलते हैं, a good collection of examples जिसको हम ट्राई कर सकते हैं. we have got Banach spaces, normal linear spaces. ना अभी हमने okay, but I think should we do just that? Yeah. नोट्स में मैंने कुछ और लिखा है थोड़ा सा. Okay. Okay, before going ahead, हम ये कर सकते हैं. चलो. Now,
Now we know that a vector spaces के बारे में जो एक important पता है तुम्हें, how to create new spaces out of the given space, given vector space. एक तरीका जो उसका है, बहुत सारे तरीके, एक तो होगा अगर उसकी सब स्पेस होगी तो वही चीज हम, या फिर हम उसका क्वोशिएंट ले सकते हैं बाय सब स्पेस. You know that if x is a vector space, then if you take the set of all cosets, collection of all cosets x by y, of course y is a subspace of x. जो interesting बात है, then you can think of all these cosets x plus this y. Of course x belongs to x, and you define operations on them with the help of operations on x. I mean to say, I say x1 plus y, one coset added to some other coset, x2 plus y is nothing but x1 plus x2 plus y. ये किया ना तुमने क्वेश्चन स्पेस का, आई बिलीव क्या होगा, alpha into x plus y is nothing but alpha x plus y. So under these operations, x by y is also a vector space. अब सवाल ये आता है कि अगर x है a normal linear space, तो is x by y also a normal linear space? और अगर है भी तो खैर बाइनरी ऑपरेशन तो पता ही हमें इसमें क्या होंगे, लेकिन नॉर्म क्या होगा इसमें, इसका नॉर्म तो खैर होगा ही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ x इज अ नॉर्मल लीनियर स्पेस. तो अगर ये नॉर्म है, जिस तरह मैंने इसके बाइनरी ऑपरेशन से, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन x, उसकी मदद से मैंने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया ऑन x by y. क्या मैं ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ नॉर्म इन x आई कैन डिफाइन अ नॉर्म इन x by y, so that x by y is also a normal linear space. So that would be our next theorem. So let me write down the statement first. Let me write it. ये थोड़ा लंबा है. Let, चलो एज अ थ्योरम पहले, अभी तो हमने एग्जांपल्स किए थ्योरम, कुछ छोटे छोटे मोटे रिजल्ट्स भी किए. Now let y be a closed, अब ये में इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, closed linear subspace of a normal linear space x. ठीक है, if norm of the coset in the quotient space, norm of the coset in the quotient space x by y is defined as, norm of the coset को मैं ऐसे दिखाएंगे, norm of x plus this capital Y is equal to infimum of the norms x plus small y, where y belongs to y. Let me call the star. Then under this star, then x by y is a normal linear space. Furthermore, if x is a Banach space, नहीं, हाँ ठीक है, if x is a Banach space, so is x by y. अगर x complete होगी तो ये quotient space भी complete होगी under this norm. Now remember this, where does this small x live? मतलब this is the norm of x. इसकी मदद से हमने define किया something on the coset. The question is, पहले तो हमें ये verify करना होगा this is indeed a norm, this satisfies all the properties of the norm. चलो वही हम करेंगे. We first show that star defines a norm on the quotient x by y. एक मिनट, शायद लाइट आ गई. यस यस यस,
मम्मी क्या I hope so. शायद अभी नहीं आई। एनीवेज ट्राई करते हैं। ओके सो पहले मुझे क्या चाहिए प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये है कि these are all non-negative numbers, so infimum of a set of non-negative numbers would be again non-negative. So therefore पहली बात तो obvious है, पहली प्रॉपर्टी ये जो x plus y जो हमने डिफाइन किया this is greater than equal to 0। और दूसरा जो इसके साथ होना चाहिए कि अगर norm of x plus y 0 है तो x plus y should be the zero vector। लेकिन जीरो वेक्टर क्या होना चाहिए? What is the zero vector? मतलब it should be x plus y should be zero of, कोई मुझे बताएगा what is the zero of the quotient space? Sir, it will be 0 by it would be 0 plus y, that is y, है ना? y y is the, यानी हमें दिखाना है कि अगर x plus y 0 है, it would be if and only if y x plus y यानी x plus y is y, ठीक है ना? So this is the same thing as saying infimum of y belongs to y, जो इसकी definition है x plus y is equal to 0, right? Now I've got infimum of a set is 0, right? Which is because norm is continuous, right? So it is the so because norm is continuous and my set is closed, right? So that means, so what I'm trying to say is this: I've got, as y ranges over y, I have got a collection of non-negative real numbers जिनका infimum 0 है, right? And we know that infimum, if it is not isolated, is a limit point. तो अगर limit point है, it implies that it is equivalent to saying that there exists a sequence. In any case, there exists a sequence actually x and k, or should I write, let me call it yk, in y such that, let me add the page, such that norm of x plus y sub k converges to 0. Now, which implies that अगर ये converge करेगा 0 को, तो it implies that as k approaches infinity, of course, तो उसका मतलब ये है कि, should I write it like this? कैसे लिखें हम उसको? So there exists a sequence like this, so I can write it. It implies that yk converges to minus x. ठीक है? एक ही बात है ना, मतलब मैंने यहाँ माइनस, मतलब definition of the convergence. As a vector, yk converges to minus x. And yk जो है, it's a sequence inside y, and y is closed. So it must contain all its limit points. In particular, limit of a sequence is also a limit point. So it implies that minus x must belong to y, which implies that x must belong to y. So minus x must belong to y because y is closed. तो x क्यों belong करेगा फिर? क्योंकि y is a subspace. So अगर y अगर इसमें है, it implies that, अगर तुमने पहले भी पढ़ा होगा, then x plus y must be y. This is if and only if it is the zero element of x by y. कहीं पे कोई दिक्कत थोड़ा सा है, लेकिन अगर तुम घर पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मसला नहीं। So पहली प्रॉपर्टी आ गई। Second one is the homogeneity. हाँ, कोई इशू है? Yes sir, sir if हाँ, and only if ऐसे आएगी condition. कहाँ पे? यहाँ पे? Sir second step, yes यहाँ sir, पे? second step.
Sir, पीछे second, जाना, sir, ये minus वाला, x belongs to y if and only if. अच्छा इधर, Yes, यहाँ sir. पे y के कन्वर्ज टू माइनस एक्स, यही है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये फिर वाला, इसके बाद का step. इसके बाद का, Yes, sir. हाँ Sir, if तो, and only if. हाँ इफ एंड ओनली इफ आएगा। देखो Yes, sir. अगर, क्योंकि वो एक क्लोज्ड है, ठीक है ना, अगर कोई भी सेट क्लोज्ड है तो इट मस्ट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, और अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता है तो वो क्लोज्ड होता है। तो इट्स बोथ वेज, मतलब इट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्लोज सेट which contains all its limit points. And minus x is the limit of a sequence inside y. Therefore, it is a limit point of y. Because it's limit of, है ना, ये यहाँ इसके अंदर सीक्वेंस है और y क्लोज्ड है, तो इसका जो भी लिमिट होगा वो y के अंदर ही होता है। तो माइनस एक्स चूंकि इसका लिमिट है तो माइनस एक्स मस्ट बिलोंग टू वाई, और अगर माइनस एक्स वाई में बिलोंग करता है, राइट, तो चूंकि ये लिमिट पॉइंट है इसका, सो देयरफॉर वाई मस्ट बी क्लोज, मतलब देयरफॉर मतलब ये बोथ वेज ट्रू है। अगर वाई क्लोज्ड है तो, अगर वाई क्लोज्ड है तो इट मस्ट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स व्हिच मींस माइनस एक्स, मतलब इसकी वजह वाई, मतलब ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर माइनस एक्स वाई में बिलोंग करता है तो वो वी हैव नो इशू। देखो अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा, है ना, रिवर्स में जाने का मतलब मुझे यहां से जाना है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इंप्लाइज x बिलोंग्स टू y, अब क्योंकि y साइज सब स्पेस है तो माइनस एक्स मस्ट बिलोंग टू y, ठीक है ना, तो इट मींस माइनस एक्स मस्ट बी द लिमिट ऑफ सम सीक्वेंस। नाउ वी कैन ऑलवेज क्रिएट अ सीक्वेंस, यू कैन टेक द कांस्टेंट सीक्वेंस, कोई इशू ही नहीं है ना, yes, sir. Yes, sir. क्योंकि माइनस एक्स वाई में है, देन या यूं समझ लो, फिर तो एक्चुअली, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर हम यहाँ से रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स में ज्यादा इजी है एक्चुअली, इस वाला ज्यादा सोचना है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सोचना है, ये वाला तो बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि अगर x y में है, अब देखो अगर x y में है तो इसका मतलब x प्लस वाई के में ले रहा हूं, है ना, ठीक है ना, एंड आई एम टेकिंग इनफिमम ऑफ, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग इनफिमम व्हाटएवर, चलो मेरे कहने का मतलब है सपोज x बिलोंग्स टू 1, अब अगर x y में है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, चलो पहले मैं यहीं से जाता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई implies that x belongs to y, which would imply this is equal to infimum of over all y belongs to y, such that x, मतलब this is the definition of this now. Now remember this, y कोई भी y हो सकता है ना, ठीक है ना, now I already know x belongs to y, so minus x belongs to y, है ना, यानी इन y's में एक minus x भी होगा, so means that this would be 0। मेरी बात समझ में आई? अगर x y में है, क्योंकि y सब स्पेस है तो माइनस एक्स बिलोंग करता है y को, सो विच वुड इंप्लाई दिस इज द इनफिमम ऑफ दिस सेट, और चूंकि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स में हमसे सबसे छोटा वाला ढूंढना है, और सेट क्या है कि हमें सारे y लेने हैं जो y के अंदर है। अब चूंकि x है y में तो माइनस एक्स भी है, तो इस सेट में एक होगा नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स विच वुड बी 0। तो मेरे कहने का मतलब है रिवर्स तो ज्यादा इजी है, ये वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, Yes, sir. नेवरदलेस, हाँ अभी भी कुछ दिक्कत है? No, sir. हो गया. हाँ मुझे लगता है ये वाला मतलब करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इशू है कि अगर वो 0 होगा, क्योंकि उसमें जरूरी है वो क्लोज्ड होना, यहाँ पे एक्चुअली इस डायरेक्शन में क्लोज्ड की जरूरत ही नहीं थी। नेवर, ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी would be this alpha, norm of alpha into x plus this y, which we know by scalar multiplication is actually alpha x plus y, which by definition would be alpha, it would be infimum of alpha x plus y, and infimum is taken over all the set where y belongs to y. Now that would imply, what would that imply? It means that infimum
y belongs to y. अब इसमें कुछ नहीं करना, you just have to take, पहली बात तो ये है, should I take, अगर अल्फा 0 हो तो ये ऑब्वियस है, आई होप यू सी दैट। मेरे कहने का मतलब है, सपोज अल्फा इज 0, पहला केस, अगर अल्फा 0 होता तो इसका मतलब दिस इज 0 इंटू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा हमारा, इट वुड बी 0 प्लस वाई, है ना, दैट वुड बी ऑफ कोर्स infimum of y belongs to y over, अब y तो सब स्पेस है तो इसमें एक एलिमेंट तो 0 भी है, तो दिस वुड बी 0, सो यू वुड, मतलब दैट्स ऑब्वियस। क्यों, क्योंकि ये है ना 0 एलिमेंट ऑफ, अभी जो हम कर चुके हैं ना कि y का, अगर ये y है तो ये 0, पहली प्रॉपर्टी से। तो अगर अल्फा 0 है तो देयर इज नथिंग टू प्रूव। अब अगर अल्फा 0 नहीं है तो हम अल्फा से डिवाइड करेंगे, यानी इसको मैं लिखूंगा अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई बाई अल्फा। You can then write it as by the properties of the norm infimum over y to y, अल्फा को यहाँ अल्फा बना देते हैं, so it's mod of alpha into norm of x plus y by alpha, so इसको बाहर निकाला हमने, infimum over y belongs to y, norm of x plus y by alpha. अब alpha is any scalar, alpha is any scalar. Now you have to think कि अगर स्केलर है, so y belongs to y, चूंकि y subspace है, if and only if y by alpha belongs to y, क्योंकि it is closed with respect to scalar multiplication, if y ranges over y, so does y by alpha, यानी it would mean it, मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मेरे कहने का मतलब, I hope you understand this, but nevertheless मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अगर मुझे तुम मतलब, मेरे मतलब यहाँ ये सोचना है तुम्हें कि अगर हम स्केलर मल्टीपल्स लें, सभी स्केलर मल्टीपल्स, ऑफ कोर्स 0 के लिए तो ट्रिवियल है, 0 अगर अल्फा 0 नहीं है तो नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल्स पे अगर ये रेंज करेगा तो इट इज एज गुड एज टेकिंग y ओवर ऑल एलिमेंट्स। मेरे कहने का मतलब है, देखो अब तुम कह रहे हो कि सारे स्केलर, क्योंकि सिर्फ वन सब स्पेस होगा। वो एक आएगा ना उसमें अल्फा इंटू वाई, है ना, तो क्या मिला मुझे, y, एक एलिमेंट है ना, मैंने इसे y बिलोंग्स टू y, नाउ दिस आल्सो बिलोंग्स टू y, है ना, तो फिर y रेंज करेगा तो सारे ही करेंगे, सो मतलब ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। अब है तीसरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में लेट्स डू इट। तो सो अब मुझे देखना है x1 प्लस वाई प्लस x, मतलब दो कोसेट्स को मैंने ऐड किया, विच वुड बी बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस y, which would be infimum y belongs to y, x1, sorry, norm of x1 plus x2 plus this small y, right? Yes, sir. Now what I do, I can write it as infimum, चलो मैं इसको अगर सेट फॉर्म में लिखता तो वो बेटर है, चलो infimum over y belongs to y prime belongs to y of the set x1 plus y1, चलो ऐसे, चलो मतलब इरेज ही कर देता हूँ, nevertheless चलो ओके, सो यू हैव इन, मैं सोच सकता हूँ infimum over, should I write, मैंने क्या लिखा, y लिखा मैंने यहाँ पे स्मॉल y, मैं इसको लिखूंगा y प्राइम बिलोंग्स टू y डबल प्राइम बिलोंग्स टू y of the set x1 plus x2 plus y prime plus y double prime। अब ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, इसमें बाकी कुछ है नहीं। So what does it mean? It means that suppose I have got a vector y belonging to y, I can always write it as y prime plus y double prime, where y prime and y double prime belongs to y,
You can always do that. मतलब सबसे सिंपल तो होगा इसको लिखना y plus 0, but that would be trivial. ठीक है ना? लेकिन दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है, should I do that now? मतलब इसको सोचने का ये तरीका है, if you have a vector space, you can break any element. Suppose you have got an element x, फिर इसमें subtract करो कोई element y, फिर उसको add करो y, है ना? x can be written like this. Can you see this? Yes. Huh? Then I can Yes, think sir. of this as x prime X plus prime. x double prime. अब x prime जो है वो क्या है? x prime जो है वो है x minus y, है ना? वो भी बिलोंग करता है उसी स्पेस में, और x डबल प्राइम जो है वो भी बिलोंग सर करता है। x y नहीं होगा ना y में, क्योंकि वो तब होगा जब x भी होगा y में। नहीं, x है ना इसके बराबर। सर मैं नीचे बोल रही हूँ x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस y बिलोंग्स टू सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, तुम इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, सपोज तुम्हारे पास जनरल कोई वेक्टर स्पेस है x, अच्छा ठीक ठीक सर, जी सर जी जनरल सर। कोई वेक्टर स्पेस है x, तुमने लिया एक एलिमेंट x, है ना? फिर लिया दूसरा एलिमेंट उसी स्पेस में, ठीक है ना? देन यू राइट x इज इक्वल टू x माइनस y प्लस y, है ना? जी सर। लिख सकते हैं ना इसको, इसके कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा, नो इश्यू। फिर तुम कहोगे नहीं मैंने लिखा x को एक्चुअली x प्राइम प्लस x डबल प्राइम, where this डबल x प्राइम। prime also belongs to y because it's a vector space. अगर x और y वहां पे है तो, है ना? और x डबल प्राइम भी y में है। ये क्लियर है? मैंने y को ब्रेक किया इनटू किसी एलिमेंट से, मतलब मैंने यहाँ, मतलब यहाँ इसके साथ कंफ्यूजन, मतलब मेरे कहने का मतलब है, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, मैं y को लिखूंगा y प्लस y1 माइनस, या माइनस y1 प्लस y1 लिख सकता हूँ। जी फिर सर। इसका नाम मैंने दिया y प्राइम, इसका नाम दिया मैंने y डबल प्राइम, एंड ऑफ कोर्स y प्राइम एंड y डबल प्राइम बिलोंग्स टू y, क्योंकि अगर y डबल प्राइम दैट मींस y1 बिलोंग्स टू y, ऑफ कोर्स y माइनस y1 भी उसमें बिलोंग करेगा। मतलब ज्यादा जी सर। गड़बड़ नहीं है इसमें, नहीं बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, हालांकि इसमें ज्यादा टाइम भी लगना चाहिए था, अभी हम पता नहीं ये प्रॉपर्टीज ही कर रहे हैं। ओके, now by using the triangle inequality of the norm, I can write it as infimum over y prime belongs to y prime belongs to y of, actually this is less than or equal to norm of, using the commutativity of the vector space operations, y prime plus x2 plus y double prime, of course this would be equal to, of course, infimum y prime belongs to y x1 plus y prime plus infimum over y double prime belongs to y x2 plus y double prime, which by definition is nothing but x1 plus y, this capital Y plus x2 plus capital Y. तो ये होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है? तो इट्स अ नॉर्म, तो स्टार डिफाइंस अ नॉर्म। अगर इरफान ये जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर भेज देना। Defines a norm on the quotient space x by y. So next is what do we have? Is it complete? मतलब when मैंने दूसरा हिस्सा था ना, if x is complete, then x by y is also complete. लेकिन मुझे लगता है वो हम कल करेंगे, इंशाल्लाह कल क्योंकि करेंगे। ये भी क्लोज्ड ही होगा। हाँ, सर इसके लिमिट पॉइंट्स, सर ये भी क्लोज होगा तो इसके भी लिमिट पॉइंट्स इसी में होंगे। नहीं, x by y क्लोज्ड होगा, ये किसने कहा? y is closed, y is complete in itself. हाँ, उसको हम यूज करेंगे that y is complete. Why is y complete? Because y is a closed subset of a complete space. अगर ना मैं मानता हूं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ y is complete का हम यूज करेंगे, लेकिन हमें दिखाना है x by y is complete, है ना?
y is complete तो imply होता है क्योंकि y closed है, it's a closed subset of a complete space, therefore it's complete itself as an independent space. But we have to show that this quotient is complete under the norm जो हमें दिया गया है, that is the infimum norm. तो इसके बारे में कुछ anything जो तुम मुझे पूछना चाहोगे? नोट्स में फिर से जाना, ठीक है? हाँ, ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है इसको कंप्लीट दिखाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए हम इसको कल ही करेंगे. सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लाइट शायद आ गई. हाँ, लाइट आ गई है, लेकिन फिर भी इसको खत्म करते हैं. हाँ इरफान, तुम इसका वो भेज देना मुझे, ठीक है? सो लेट मी, इसको बंद करते हैं. ओके, गॉड ब्लेस यू. कल देखते हैं फिर.